We have a chat box. Before we start, I just want you to type from which city you hail from. It can be Bombay, Delhi. Just use the chat box so that we'll understand from which all cities do we have audience. We are doing it parallel on YouTube also. I request all our attendees to type in the YouTube chat too, in case they are attending through YouTube. Thanks, Prakash says from Pune. Sanjeev says Kolkata. Nishchal from Mumbai. Ashfaq from Gurgaon. Amar from Bangalore. Wow. We have Korupolu Peraju from Dubai too. And there are many people joining from Mumbai. Yeah, I think that's good to go. I think we can start. So before we start, I have two questions. How many of you would like to diversify your portfolio, knowing and understanding very well about currency derivatives? If your answer is yes, please type Y in the chat box. I request all the participants to keep it engaging. Yeah, thanks. I can see many of Ys coming in the Zoom. Let me also just check parallel on YouTube. Great. Okay. So fantastic. Awesome. And before we start, let me introduce myself. My name is Ramesh Varkhedkar. I head currencies and commodities as ICICI Securities. मैं इस मार्केट्स में पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ. 2003 में मैंने मेरा शुरुआत किया था करियर का विद ICICI बैंक, and through and through I've been in the foreign exchange business. So this is some product which is very close to my heart. I have run this product in bank, ICICI Bank, then with Citibank, worked with exchange for some time, then in the broking industry. So 20 years मैंने देखा है कि ये प्रोडक्ट कैसे evolve हुआ है, कैसे grow हुआ है. Earlier, when I was with bank, it was very opaque market. Only banks were offering currencies, which is foreign exchange. And 2008, when currency derivatives was launched by NSE, like it was an explosion. So many people were able to participate in this market, which was not only corporates, but also individuals, traders, HNIs, and participants. I've seen the growth. I also remember जब पहला 1,000 crore का turnover हुआ था, हमने केक काटा था. And today we clock more than 2 lakh crore per day in a span of 15 years of launch. So markets have gone phenomenally thanks to regulators, RBI, and there has been a gradual progression and development of this market. When it got started, it was only USD INR futures, right? Vital, you have been there in markets for 28 years. I'm sure you also have been a part of this journey. So when it got launched, it was only USD INR futures. Then the cross futures came in, then USD INR option contract came in, then other contract options came in. उसके बाद में भी बहुत सारा इवॉल्वमेंट हुआ. पहले it was only monthly contracts, then weekly contracts came in, and today we have something new which has got launched this month, right? Which is an extension and expansion of what all has been the development of currency markets, which Vittal will share. So I was just sharing my experience, 20 years in the foreign exchange markets, 15 years in currency derivatives, seen the growth from 1,000 crores per day to 3 lakh crore also that we have seen at the peak. Phenomenal markets, right? And I believe, I'm not saying that one should stop trading in equities, but also look at currency derivatives as a part of portfolio diversification. So today we have with us Mr. Vittal More. He has the product strategy and development at NSE. We are very fortunate to have him with us on today's webinar. He's vice president with NSE, and he's been with them for 28 years, 28 long years. It's not currency, but he looks into the product development across all products of NSE. So a very large, vast experience. I think we should all try to gain something from him today. We also have Anup Sahu from ICICI Securities Research. More than a decade of experience. Anup and his other colleagues put together come out with all those daily reports, weekly reports, monthly reports, yearly reports, right? Through which we try to educate our customers, make them understand about this product, and then take their calls. They also work on commodities. So Anup and team are there from morning 9 o'clock in shifts till 11:55 late night, because they handle currencies and commodities both. So yeah, that's all about the background or introduction. Before we start, may I request participants to just type their understanding about currency derivatives. Please type 1 in case you are new, 5 if at all you think that you are somewhere in between, and 10 if at all you know everything about currency derivatives. So basically, to help us to manage our flow, what all to cover. So I request participants to type in the chat box. Oh, I can see a lot of ones.
Sanjay says one, Amar says one. Okay. One. Sayed Amar one. So Vital, Anup, we have, I think I have seen only all ones only on Zoom. Let me just check on YouTube Live also. Yeah, guys, please type. Yeah, somebody says SSD Music Junction 5 in YouTube Live. Okay. So since there are many ones, I suggest quickly we can run through the basics of currency so that people understand about currency derivatives, then talk about the new launch, and then Anup will help with the research recommendation. I think the flow is fine, right? If the flow is fine, I request participants to type F flow or fine in the chat box. Yeah, thank you. Thank you for those responses. Let me just share my screen. And colleagues, just let me know if my screen is visible. It's visible. Yes, sir, visible. Thank you. Thanks. So we have seen last financial year rupee to be very volatile. We have seen 72 and also 83. This year, it's not been that volatile. And currently what we are experiencing is multi-month low volatility in rupee dollar. So that's how this new launched new product, which Vitthal will dwell upon. So rupee, we have seen at 83, and we're also seeing very close to the all-time high. So rupee at all-time high, currency derivative opportunities, there are many. And with new launch, some more opportunities coming up. Yeah. Before we start, I always think that we should start with why, right? Why currency derivatives? Because unlike your equity markets where you have thousands on thousands of scripts, in currency derivatives, there are only 4 currency pairs which are traded on Indian exchanges, which is USD INR, Euro INR, GBP INR, JPY INR. So basically, there are major currencies which are traded. And here the lot size is very low. Unlike, even though this is derivatives, in equities, you see the range between 5 lakh to 10 lakh. But here, everything is a multiple of 1,000 lots. So you find the range of contract value between 56,000 for yen to say 1 lakh for GBP. So very few currencies, smaller lot size, smaller margin, higher leverage, right? These are the advantages of currency derivatives and longer trading hours. Equity markets open at 9:15, whereas currency markets open at 9 and are open till 5 p.m. to trade. Yeah. And the transaction cost is very low in currency derivatives. Currently, there is no CTT, no STT when somebody trades into currency derivatives. Participants, there are traders, hedgers, arbitrage. So all the participants are there in these markets. Yeah. This is just a summary which I was highlighting. In equities, you have hundreds of scripts, whereas in currencies, there are only 4 currency pairs which are traded. Contract value there is between 5 lakh to 10 lakh. Here it's 60,000 to 1 lakh. So contract size is smaller. Margin requirement is 2.5% to 5%. So you have almost 33 times of leverage, longer trading hours compared to equities. So this is what is the advantage. Now you have everyday expiry in the capital markets. So currency markets expire every Friday, right? Like how you have Nifty and Bank Nifty, which is the most traded currency options. Here in currency pairs, it's USD INR. So this is all for those guys who have type 1, who wanted to understand about basics about currencies. This is what is basic. I'm giving a comparison between equity so that you can understand. Volatility is very limited. Unlike equity contracts, where you have 3 months contracts which are traded, which is current month, next month, and far month. In currencies, you have all the 12-month future contracts available for you to trade in USD INR. So what I mean to say is contracts are pretty liquid, and you can take far dated contracts also to trade. In equity market and commodity markets, there is a STT or ACTT, whereas in currency markets, there is no STT or CTT. So this is what are the advantages of currency markets. Again, I'm not saying that one should stop trading in equities, but currency derivatives is a good segment to diversify the portfolio. Quickly, again, for those guys who are new, let me quickly run through the currency specification. Like in currencies, it's only derivatives. Like in your equities, how you have futures and options. And when you say futures, 2 things are standardized: the lot size and the expiry. So here there are 4 currency pairs: USD INR, Euro INR, GBP INR, and GPY INR, respective currencies, right? Dollar INR,
Euro INR, Pound INR, and Japanese currency, which is JPY INR. And all the quotations are in INR only. So what I mean to say is all these contracts are cash settled and cash settled in INR. आपका जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको इवन आप यूएसडी यूरो देख रहे हो तो उसके अंदर कोई सेटलमेंट नहीं होगा. एवरीथिंग इज सेटल्ड इन इंडियन रुपीज ओनली. या और जैसे कि इक्विटी मार्केट के अंदर आपने देखा होगा टिक साइज है 5 पैसा is the tick price which keeps moving. यहाँ पे quarter paisa, when I say quarter paisa, 1/4 of a paisa is what is the tick size. Markets open Monday to Friday, 12 months contracts are available. Monthly contracts expire last working day minus 2 working days. I'll just show you a calendar जिससे कि आपको और बेहतर और अच्छी तरह से समझ में आ जाए. और weekly contracts हर Friday expire होते हैं 12:30 बजे. Okay, let me move ahead. इसको जरा ध्यान से देखना. ये एक महीने का कैलेंडर है. आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी दिस. लास्ट 2 days ऑफ द मंथ इज संडे एंड सैटरडे. सो बेसिकली संडे और सैटरडे मार्केट बंद होते हैं. दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्किंग डेज और ट्रेडिंग डेज. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक्सपायर होता है? लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ. अगर इस कैलेंडर में आप देखोगे इस महीने का लास्ट वर्किंग डे है 29 फ्राइडे, बराबर. सो 29 से 2 वर्किंग डे पहले जो ग्रीन में आपको दिख रहा है 27, मंथली कॉन्ट्रैक्ट 27 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा. आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर. इक्विटी मार्केट्स के अंदर थर्सडे एक्सपायरी है, अभी मंडे ट्यूसडे भी एक्सपायरी है. बट करेंसी मार्केट के अंदर मंथली कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ऐसे नहीं है कि इट एक्सपायर्स ऑन थर्सडे और फ्राइडे, बट इट एक्सपायर्स ऑन लास्ट वर्किंग डे minus 1 working day. I hope this is very important. If people have understood, I request you to type in the chat box you, just in short form you, so that हम समझ जाए कि आपको समझ में आ गया मंथली एक्सपायरी क्या है. थैंक यू. जस्ट टाइप यू इन द चैट बॉक्स. Okay, thank you. I hope the speed is okay. We have understood why currency derivatives, we have understood about the futures contract, then we understood about the monthly expiry, and I said weekly expiry. Weekly expiry is this LO, expires every Friday. और ये करेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है दोपहर में 12:30 बजे एक्सपायर होता है. FBIL का प्राइस आता है, which is the RBI agency. So they came out with a reference rate, and as per that reference rate, it is settled. So we have weekly contracts, we have monthly contracts. Monthly contracts expire last working day minus 2 working days, and weekly contracts expire every Friday at 12:30 noon. Okay, let me move ahead to next slide. Some challenge. Okay, great. I hope everybody understood about futures. Futures में 4 currency pairs, 1000 का lot size, monthly expiry, weekly expiry. Let's move on to options. NSE का करेंसी का ऑप्शंस भी है. सेम यही 4 करेंसी पेयर है. डॉलर INR, यूरो INR, GBP INR, JPY INR. टिक साइज भी सेम है, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 5 PM. बट जब आपके एक्सपायरीज है यहाँ पे करंटली व्हाट वाज बीइंग ट्रेडेड इज 12 ITM इन द मनी और 12 OTM के कॉन्ट्रैक्ट्स और एक नियर द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स. तो 25 स्ट्राइक प्राइस पर अवेलेबल. मैं वंस आई फिनिश माय प्रेजेंटेशन मैं चैट के अंदर कुछ लिंक्स डालूंगा, बिकॉज आई एम श्योर बहुत लोगों ने 1 बोला है एंड उनको ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, नियर द मनी में गो ए लिटिल बाउंसर. सो बेसिक बहुत छोटे छोटे वीडियो हमने बनाए हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, बिकॉज आज अपना हीरो प्रोडक्ट इज लॉन्च ऑफ न्यू स्ट्राइक इंटरवल्स. तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड अगर हम ये बेसिक्स अगर डिस्कस करेंगे तो विल नॉट हैव टाइम. तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट इज जस्ट गो थ्रू दैट लिंक्स विच आई एम शेयरिंग in your leisure, which will help you to understand about all these basics. Yeah, I think, hope that's fine. So Vittal will talk about those. Coming to the cost, as I said, there is no STT, there is no CTT. Regulatory costs are very, very low in this. So the entry and exit in currencies is very, very easier and quick. So that's all I wanted to give a small brief before we start on the न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. आई थिंक ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स हैव अंडरस्टूड अबाउट द बेसिक्स. व्हाई करेंसी, क्यों करना चाहिए, क्या एडवांटेज है करेंसी में करने का, फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या स्ट्राइक इंटरवल्स है. सो दिस व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन द बिगिनिंग. एंड नाउ ओवर टू विठल. विठल, वेलकम. Congratulations on launch of those new strike intervals. I personally believe that it's a progression and it will help all the traders and retail investors to trade better in currency options with these new strike intervals. Over to you. Thank you, Ramesh.
It was a very engaging presentation which you provided. I think started with basics. It was quite useful to even listen to your presentation to just refresh the basics. So thanks, and thanks to Ramesh and thanks to ICICI for providing us opportunity to meet the trading participants of ICICI and just give an update about the new product improvisation, what has been done in our currency options product. So before we get into the specifics of the new improvisation, just highlighting as Ramesh mentioned, over a period, currency markets has seen good amount of growth, and he also alluded to the celebrations which they had done when on reaching 1,000 crore turnover. So here this is a chart as to how has been the growth in the currency market. So currency futures का जो left hand side पे जो chart है, if you look at it, gradually वो year on year there has been an increase. Last year was a very exceptional. Last year में there were a lot of geopolitical related uncertainties, inflationary pressures, etc. So currency markets were doing well, and also just to highlight that there is a lot of benefits specifically for corporates, SMEs, those kind of entities to participate in currency markets for their meeting their hedging requirement. Currency options ka, if you look at the chart, growth has been quite consistent. Yet we are yet to see the kind of spurt which we have seen in the currency futures. Then, as Ramesh also mentioned, so there are four currency pairs which are linked with INR. So USD INR, which is the primary currency pair. कोई भी country में अगर आप देखो तो उसका USD versus जो domestic currency pair है, तो उसी का जो highest trading volume, all the trade is done in that currency pair. So that contract definitely attracts a large component of volumes. India is also no exception. So अपने market में भी USD INR pair, you would see lot of traction, lot of liquidity in the USD INR pair. But good thing is that over this period, apart from USD INR, in the other INR pairs also we have seen good amount of growth. अगर हम यहाँ पे चार्ट में अगर देखते हो तो यूरो आईएनआर फ्यूचर्स में लास्ट करंट फाइनेंशियल ईयर में वी आर डूइंग रफली 2000 crore plus ADV. GBP INR futures we are doing 3500 crores plus. GBP INR futures and GBP INR options specifically highlight करना चाहूंगा कि इन प्रोडक्ट्स में लास्ट ईयर से वी आर लुकिंग सीइंग लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ द एक्टिविटी इन दिस करेंसी पेयर्स. क्रॉस करेंसी के वी हैव 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल जहाँ पे आईएनआर लेग इन्वॉल्व नहीं होता. जस्ट एन एज एग्जांपल जैसे यूरो यूएसडी इस टाइप के जो करेंसी पेयर्स होते हैं तो उनका वो प्रोडक्ट होता है. वी हैव दोस 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आल्सो इन क्रॉस करेंसी अवेलेबल ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. जीबीपी आईएनआर ऑप्शंस का एज आई वाज मेंशनिंग, सो ओवर अ पीरियड अगर ये मंथली वाला टेबल हम लोग अगर देखते हैं तो एवरी मंथ वी हैव सीन गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड एंड द प्रीमियम टर्नओवर आल्सो. So it is heartening to see that there is a liquidity which is moving into the other currency pairs also apart from USD INR. Now coming back to the key topic which Ramesh mentioned and for which we are here. So basically recently we have carried out a revision in terms of the strike interval. So strike scheme, the current strike scheme which was covered in the earlier slides where we have 12 and 12 strikes of 0.25. तो हम लोग अभी क्या ऑब्जर्व कर रहे थे फॉर लास्ट 4 to 6 months. सो देयर हैज बीन स्लाइट डिप इन टर्म्स ऑफ द करेंसी ऑप्शंस वॉल्यूम्स एंड वन ऑफ द रीजन विच मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स व्हाट दे मेंशन कि लोअर रूपी वोलाटिलिटी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड. सो लास्ट 3 to 6 month पीरियड में अगर आप देखते हो वोलाटिलिटी टिपिकली जो अदरवाइज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं करेंसी मार्केट्स में तो काफी लोअर लेवल पे रहा है. बिकॉज वोलाटिलिटी लोअर लेवल पे है तो ऑप्शंस में उस टाइप का मूवमेंट भी काफी लोअर लेवल पे होगा. वॉल्यूम्स जो हम लोग इसकी वजह से देख रहे हैं कि जो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सिंगल स्ट्राइक ओनली, क्योंकि वो मोमेंटम ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स को उस टाइप का मिलेगा नहीं टू ट्रांजैक्ट इन फर्दर स्ट्राइक्स और स्ट्राइक्स विच आर ओटीएम विच इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द एटीएम स्ट्राइक्स. सो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स या उस स्ट्राइक्स में ज्यादा वॉल्यूम करने की पॉसिबिलिटी बन नहीं रही थी क्योंकि पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी कंफर्ट नहीं था कि रूपी उतना उस वे में मूव होगा करके. इस चार्ट्स में हम लोग अगर देखते हैं ये टेबुलर ये टेबल जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि जैसे कॉल्स में इफ यू लुक एट द वॉल्यूम सो 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट विच इज ट्रेडेड ओनली इन वन स्ट्राइक. सिमिलरली ऑन द पुट साइड सो ओनली वन स्ट्राइक इज गेटिंग द एंटायर वॉल्यूम. सो वो क्या होता है कि इसके लिए ऑल द वॉल्यूम्स इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन वन स्ट्राइक. It leads to a lesser trading opportunities for trading participant. If someone wants to hedge also effectively lower ये जो higher strike interval है जिसकी वजह से उसको दिक्कत होती है. So to take care of this problem, so what we have done is we have revised the USD INR का strike scheme.
तो यहाँ पे हम लोग जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में कि जैसे 12-1-12 की अपने 0.25 की स्ट्राइक इंटरवल्स थी, तो हम लोग उसको अभी एक एडिशनल 313 के स्ट्राइक इंटरवल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विथ 0.125। तो करंटली 0.25 का अपना जो स्ट्राइक इंटरवल है क्वार्टर पैसा का, उसका हाफ साइज वाले वी विल हैव 313 स्ट्राइक्स अवेलेबल। तो हम लोग ऑर्डर बुक को ज्यादा क्लटर नहीं करना चाह रहे हैं कि मल्टीपल स्ट्राइक्स इंट्रोड्यूस करके, बट जितने रिलेवेंट स्ट्राइक्स होंगी नियर एटीएम में, जहाँ पे टिपिकली हम लोग देखते हैं कि अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स उसी रेंज में होते हैं, एटीएम के 3 स्ट्राइक्स अबव 3 स्ट्राइक्स बिलो इन द नियर आईटीएम एंड नियर ओटीएम। तो उस स्पेस में हम लोग यहाँ पे एक एडिशनल स्ट्राइक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्टिसिपेंट के लिए। जो अर्लियर चार्ट में हम देख रहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एटीएम स्ट्राइक में बना रहता है क्योंकि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ही नहीं होती, लोअर वॉलेटिलिटी की वजह से करेंसी रेट मूव नहीं हो रहा है उस डायरेक्शन में। तो इसीलिए अपने 0.125 के हम लोग 313 के स्ट्राइक इंटरवल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये वाला जो हमने इंट्रोडक्शन किया है दैट इज इन ऑल वीकली एंड नियर मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, एंड स्टार्टिंग विद सितंबर 4th। रिसेंटली इसी मंथ में इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 2 वीकली एक्सपायरीज ऑन दिस। On the right hand side, if you look at the strike scheme illustration, just to give in terms of numbers, probably it will be better. So 83 अगर अपनी एटीएम की स्ट्राइक है, तो अपने यहाँ पे जैसे 1 और 3 वाली जो स्ट्राइक है, जो फाइनल इंटरवल की स्ट्राइक 0.125 के रेंज में जो अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, जो तो पार्टिसिपेंट इसमें बेनिफिट ले सकते हैं ट्रांजैक्ट करने का, बेटर वे में उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को अगर यहाँ पे फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो इस वे में ये अपने जैसे एडिशनल 3 स्ट्राइक्स है जो अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है, जिससे पार्टिसिपेंट्स को स्पेसिफिकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में काफी बेटर वे में, फाइनर वे में वहां पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूट करने का अपॉर्चुनिटी होगा। ये this is basically just highlighting what are the initial observations, though 2 weeks is a very small period for us to conclude on overall observations. बट इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि टिपिकली फर्स्ट जो अपनी एक्सपायरी रही थी, तो फर्स्ट एक्सपायरी पे जनरली इस चार्ट में ब्लू बार्स है वो अपने बिफोर न्यू ईयर स्ट्राइक इंटरवल का जो पैटर्न रहा है ट्रेडिंग का, उसको डिनोट कर रहा है। ऑरेंज में है दैट इज आफ्टर वाला जो फर्स्ट एक्सपायरी है उसको डिनोट कर रहा है। तो हम लोग अगर इस चार्ट को देखते हैं, लेफ्ट हैंड चार्ट को, कि परसेंटेज ऑफ प्रीमियम टर्नओवर एक्सपायरी वीक में जो हो रहा है, जैसे अर्लियर जो एटीएम और ओटीएम अगर आप देखो तो लगभग अपने 80-85% अपना जो ट्रेडिंग टर्नओवर था ये इन दोनों स्ट्राइक्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड था, क्योंकि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ही नहीं थी अदर स्ट्राइक्स में। अब ये न्यूअर स्ट्राइक इंट्रोडक्शन होने के बाद में अगर आप देखो तो बार वो काफी बेटर वे में बैलेंस्ड आउट है। तो पार्टिसिपेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अभी वहां पे एक अपॉर्चुनिटीज उनको दिख रही है कि ओटीएम 1 स्ट्राइक में, ओटीएम 2 स्ट्राइक में, वहां पे क्योंकि अभी फाइनल स्ट्राइक इंटरवल आने से वो उस टाइप का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड अगर हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड एक्सपायरी वीक में फॉर द फर्स्ट एक्सपायरी, यहाँ पे भी जैसे ब्लू बार जो अपना डिनोट कर रहा है कि प्रायर टू न्यू स्ट्राइक इंट्रोडक्शन कैसे था, ऑरेंज में आफ्टर स्ट्राइक इंट्रोडक्शन कैसे था, तो आपको यहाँ पे भी वो सिमिलर ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे। आपकी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अभी ट्रेडेड हो रहा है वो थोड़े बैलेंस आउट हो रहा है। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अभी अपने मल्टीपल स्ट्राइक इंटरवल्स में पॉसिबल हो रही है ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए। अगर ये नंबर्स में अगर हम लोग फर्दर उसको देखें, जैसे फर्स्ट वीकली एक्सपायरी में हमने ऑब्जर्व किया था कि 22% ऑफ प्रीमियम टर्नओवर वाज इन द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फाइनल स्ट्राइक। ये 0.125 के जो स्ट्राइक इंटरवल है, तो उसमें लगभग 22% का प्रीमियम टर्नओवर और 28% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड वेयर इन दिस फाइनल स्ट्राइक इंटरवल। सिमिलरली इस चार्ट्स में हम लोग डिनोट कर रहे हैं कि ऑफ द टोटल टर्नओवर विच इज हैपनिंग इन द करेंसी ऑप्शंस फॉर द यूएसडी आईएनआर ऑप्शंस, तो लगभग डे वाइज यहाँ पे जो हमने चार्ट प्लॉट किया है, तो रफली 15-17% ऑफ प्रीमियम टर्नओवर फॉर द एंटायर मार्केट इज नाउ कमिंग थ्रू द फाइनल स्ट्राइक इंटरवल। Similarly, percentage of contracts which are traded in the final strikes, this is ranging somewhere between 25 to 27% in last 2 weeks. अगर ऑप्शन चेन अगर हम लोग देखते हैं, टिपिकली ये वाला जो एक ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट रफली ऑप्शन चेन के थ्रू मार्केट को पूरा ऑब्जर्व करता है, तो ये अर्लियर जो सिनारियो अगर आप देखते हो कि जैसे 82.75 की स्ट्राइक पे आपको काफी सारा कॉल्स का वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड जो दिख रहा है, तो यहाँ पे अपने को अभी नए वाले सिनारियो में 83.125, जैसे 0.125 वाले स्ट्राइक्स में हम लोग अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काफी सारा वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। स्पेसिफिकली नियर एक्सपायरी जब अपना हो रही है, सो मे बी ऑन द डेज ऑफ थर्सडेज एंड फ्राइडेज, so there is an additional trading opportunity or a finer trading opportunity that is available.
This is just one snapshot of the actual market which we had taken after launching the final expiry. And this is just one day prior to expiry. If you look at it, so the volumes are not only in ATM, which was the earlier scenario. Volumes you could observe apart from ATM in the one strike on OTM side, one strike on the ITM side. There also now there is a good amount of liquidity which is building up. So if you look at the order book, bid-ask spread, and the liquidity which is available, which is also quite reasonable now, and we hope that this will pick up further for and will benefit the market participants. So broadly this is what we just wanted to highlight कि अपने यहाँ पे नए जो स्ट्राइक फाइनल स्ट्राइक इंटरवल जो अभी इंट्रोड्यूस किए हैं तो उसका बेनिफिट जो डेफिनेटली मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए होगा, मार्केट पार्टिसिपेंट के फीडबैक के बेसिस पे ये किया गया है. And if there are any further questions, Ramesh would request you to moderate those questions because you are good at moderating, and we can take up these questions. So thanks. Sure, Vittal. Thanks for showing those statistics. And all participants, ये जो विठल ने दिखाया आपको ये 8 सितंबर तक का नंबर है when it had got launched on 4th. So it's just 1 week numbers. But what I believe is these numbers have become much bigger. I mean to say the percentage contribution of this 12.5 as strike price and also the premium which is traded, which is more than 30%. So ये सभी रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए है. ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो पीपल मे गेट स्टक बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी. दैट इज नॉट द सिनेरियो. देयर इज enough liquidity, enough volume, enough OI which is there in all these strike prices. So I believe ये अपने ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा है strike prices. So thanks Vittal. End में we'll take questions. वैसे चैट में questions आ रहे हैं. We'll take all those questions. We'll try to answer as many questions as possible. So now we have our colleague Anup Sahu. He's from the research side. Anup, in the recent past, we have seen the volatility to be very low, and especially with strike intervals of 25 paisa, it was very tough for you also to give option calls. I believe now with this 12.5 strike price, right, and with low volatility zyada hai, there is an option for participants. Volatility kam bhi hai, still now we have these new strike prices which will help all our participants to trade. So Anup, over to you. Request you to share some strategies, what our retail participants should do in case the volatility is high, in case the volatility is low, so on and so forth. You want me to share the presentation? Yes, sir. Yeah, give me a second. And let me know once my screen is visible. It's visible. It's visible. Oh, great. ठीक है. Over to you, Anup. Yeah. Good morning, everyone. Let's start with the strategies first. In dollar rupee, mostly there are various kind of strategies that we in a day-to-day trades or in a weekly trades. First of all, let's talk about the bullish strategies that one can expect the dollar, rupee, or pair to go up. In that case, we mostly do covered call or protective futures. These are the two major strategies in combination with the futures one do. First of all, in that case, in protective futures, this is a bullish strategy, and we buy the futures, and to protect the loss against price fall, we also buy a put. In that case, when prices comes down, one can protect the losses with a long put. For example, I am expecting the dollar rupee pair to go beyond 83 and all that. So in that case, at current price, I buy the future of the current expiry, and to protect the if correction in case market comes down, so we take a lower end or like 82.50 put or with a lower premium. So in case prices comes down, so we minimize the losses. Similarly, when it comes to covered calls, when we don't expect prices to go to beyond 83.30 or 83.50 or beyond that, and we have a long option, a long futures, so to protect the losses if prices won't go beyond 83, we sell the options at higher end and protect the losses if prices if the future doesn't go beyond, and we the premium that we get from the selling the options, that will be the total gain if prices stays below the 83. For example, I bought 82.50 future and sell a call of 83 at a premium of 55 paise. If USD INR falls below 82.50 or towards 82, then someone will losses. Otherwise,
otherwise we'll still in the money. Like the premium that we got from the selling of the options, we get the we'll get the premium, and the future, when future prices goes beyond, so we make profit in that. These are the two kind of bullish strategies that we have. Similarly, there are also bearish strategies also there, totally in line with the market. It's a reverse strategy of that. When it comes to range bound strategies, that is mostly important in currencies, because in currencies we do see market moves in a very tight range. Last week we saw that it is totally in a range, like 80 to 80 or 83.20. This is the hardly range, is 40 paisa range. So in that case, one this is most chances people do strangles and straddles, like short strangles and short straddles. These are the one can gain the play the theta in that case. For short straddles, like 83, if you are expecting prices to remain around 83, so we go with the short straddle strategy, that is play for the less volatility in the market. For example, say this week, in the coming week, we had FOMC meeting is there, and for example, in other some cases, RBI policy is there, inflation numbers are there, so we don't expect high volatility in the market. So in that case, we go with the short strategies. Like totally, we want to gain from the range bound market, and we will gain from the time decay, and we'll get the premium. That is the motto behind this short straddle and short strangle strategies. In short straddles, we sell the at the money call and at the money puts, and this recently the introduction of weekly Anup, sorry expiries. to interrupt. Some request we are getting that please have a mix of Hindi and English. ओके 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 आई डू दैट. देखिए, अभी अगर शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल हम करते हैं, तो एट द मनी के कॉल और ऑप्शन जो है वो सेल करेंगे, एंड जो प्रीमियम है इन दैट विल गेट, दैट इज द मेन मोटो कि हम लोग उसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी 83 का कॉल है, जो कि समझ लीजिए 20 पैसा या 25 पैसा है, एंड 83 का पुट भी ऑलमोस्ट सेम 80 20 या 25 पैसा है. अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो पेयर है रेंज में मूवमेंट करेगा, लाइक it will not go beyond 83.25 or 82.75, so we can sell at the money strike price call or put option, and we'll get the premium if the future expires within 83.25 and 83, near around 83. अभी आरबीआई का पॉलिसी है या एफएमसी मीटिंग है आगे, सो मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है, एंड इन दैट दीज आर द स्ट्रैटेजीज वन कैन अडॉप्ट. अभी शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या है, आपका रिस्क भी रहता है इफ प्राइसेस गोज बियॉन्ड आपका जो रेंज है, बट उसके लिए अगर उसको नेगेट करना है तो उसके लिए दूसरा स्ट्रैटेजी हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. अभी शॉर्ट स्ट्रैंगल में अगर हम आके देखेंगे, सो इट इज लाइक जो हम लोग आउट ऑफ द मनी के कॉल है और आउट ऑफ द मनी के पुट है, वो हम सेल करेंगे. उससे जो प्रीमियम रहेगा वो टाइम जो बोलते हैं हम लोग डीके, टाइम डीके या थीटा का फैक्टर है, उसको प्ले करने के लिए हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट जो लास्ट वीक में जो हुआ, इट वाज इन अ वेरी रेंज, बिकॉज इवेंट्स है आगे, एफओएमसी मीटिंग है, सो रुपये डॉलर रुपये में इतना मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज दैट उसको हम लोग कैप्चर करना है तो जो 1 वीक का एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें आप देखेंगे तो 83 का 25, 83.25 या जो भी 82.75 के जो इसमें है प्रीमियम कम होता गया है. अभी लास्ट वीक इट वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड, अगर दोनों का प्रीमियम में कंबाइन करो, इट वाज अराउंड 20 और 25 पैसे. नाउ इट इज रेड्यूस टू 10 और 12 पैसे. सो ये शॉर्ट ट्रायंगल में आप लोग ऐसा प्ले कर सकते हैं व्हेन यू आर aware that the volatility will be less in the week, in the coming week or ahead of the event. तो इवेंट को प्ले करना है और वोलेटिलिटी को प्ले करना है, तो ये दो स्ट्रैटेजी आई वुड सजेस्ट बेस्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट विल बी इन अ वेरी टाइट रेंज. This is all about the short straddle and short triangle strategies. And for range bound strategies, one more option is there, that is to protect from the high risk, like high volatility. If in case you played
for less volatility. And in some cases, in some scenarios, what happens? The volatility turned out to be higher. So to protect that, to protect that, we have another strategy. So that will be uh, iron fly and iron counter. These are the two derivative strategies that one can opt for. Uh, so can we go for the next slide, please? Yeah, I've Yeah. just, yeah, thanks. The range bound strategies, it is one butterfly. There are many strategies, but I would suggest these are the two best strategies I would suggest. One is iron fly and another one is iron counter. In iron fly, it is a combination of bull call spread and bull put spread. That is, in simple, if someone want to understand, there is a combination of short straddle and long straddle. Like for example, uh, this coming week we have in the coming week we have RBI policy or FOM's policy. So next 3 days or till the policy, we don't see any movement. Okay, so अभी हम क्या करेंगे इसके बेनिफिट के लिए, हम लोग मोस्टली अगर ज्यादा प्रीमियम लेना है तो हम लोग स्ट्रैडल सेल कर देते हैं, लाइक एट द मनी के कॉल और पुट जो कि है हम सेल करते हैं. ओके, जो हम लोग सेल करेंगे उसमें जो प्रीमियम रहेगा दैट विल बी द टोटल गेन. उसमें जो फॉर एग्जांपल अगर आप IT3 का एट द मनी का सेल करते हैं तो समझ लीजिए कॉल में 18 पैसा है एंड पुट में भी 18 पैसा. सो दो जो भी 36 पैसा का इनफ्लो है दैट इज योर टोटल गेन. ओके, अगर वोलेटिलिटी नहीं होती है टिल द एक्सपायरी विल गेट द 36 पैसा प्रॉफिट, दैट इज योर मैक्सिमम. अगर हम वोलेटिलिटी के अगेंस्ट अपने को प्रोटेक्शन रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बाय वन आउट ऑफ द मनी पुट और एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन. सो इन दैट केस हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि रेंज क्या है अगर ज्यादा वोलेटिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिफाइन किया कि समझ लीजिए 80 to 60 के नीचे तो आई डोंट थिंक सो इट विल गो, एंड ऑन द हायर साइड आई एम एक्सपेक्टिंग आल्सो 83 30 या 35 के ऊपर तो नहीं जाएगा. सो आई डू व्हाट, मैं क्या करूंगा प्रोटेक्शन करने के लिए, मैं ये दोनों के जो 83 37 का भी कॉल ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन, तो वो कॉल में बाय कर लूंगा विद 5 पैसा का जो प्रीमियम है वो देखिए मैं बोला लेट्स टेक अ बेट. ओके, अब और नीचे 80 to 62 का 62 या 62.5 का वो भी मैं 5 पैसे में बाय कर लूंगा. ओके, दैट विल बी टोटल कॉस्ट टू मी, एंड मुझे 36 पैसा मिला है एंड यहाँ पे 5 पैसा यानी टोटल 10 पैसा. सो टोटल गेन विल बी माई 26 पैसा इन दिस केस. ओके, सो अभी अगर ये जो एक्सपायरी प्राइस रेंज में ही रहता है 83 के आसपास ही रहता है एंड इन बिटवीन 80 to 60 और 80 to 30 ये बीच में रहता है, तो देन आई विल गेट द प्रीमियम ऑफ 36 minus 10, तो 26 पैसा दैट विल बी द मैक्सिमम. एंड हाँ, अगर बियॉन्ड जाता है प्राइसेस, so that in that case there will be losses. So for that, this is the strategy iron fly one can use when you think market will be in a range and to gain from the theta, like to play the theta in the options. अभी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज आयरन कॉन्डर. इसमें क्या करेंगे, ये भी सिमिलर स्ट्रैटेजी है, इट इज अ सेम कॉम्बिनेशन ऑफ बेयर कॉल स्प्रेड एंड बेयर पुट स्प्रेड. अभी बट इसमें क्या होता है, अभी दो स्ट्रैंगल प्ले करेंगे हम इसमें, लाइक स्ट्रैंगल वर्ड. अभी एट द मनी का जो है वो हम नहीं करेंगे, नियर एट द मनी जो भी कॉल और पुट है उसमें हम प्ले करेंगे, और जो डीप आउट ऑफ द मनी और कॉल और पुट है उसमें प्ले करेंगे. स्ट्रैंगल जैसा कि हम लोग आउट ऑफ द मनी ही करते हैं, एट द मनी नहीं करते हैं, सो इसमें ही करेंगे. अभी जो आयरन कंडोर है इसमें हम क्या करेंगे, बाय करेंगे पहले आउट ऑफ द मनी के पुट एंड सेल नियर टू द एट द मनी पुट जो भी है वो करेंगे. ओके, एंड उसके बाद और क्या करेंगे, जो अभी एक स्ट्रैंगल आपका नियर एट द मनी हो जाएगा और एक स्ट्रैंगल होगा जो कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी का. फॉर एग्जांपल अभी 83 के आसपास है, आपका प्राइस 83 के आसपास है. ओके, सो अभी नेक्स्ट वीक एफओएमसी मीटिंग है, सो हम लोग क्या करेंगे 83.12 का जो स्ट्राइक का जो है कॉल वो हम लोग सेल करेंगे और हम लोग बाय करेंगे 83.50 का स्ट्राइक का
कॉल, उसमें जो हमको टोटल इनफ्लो रहेगा 8 पैसे का। ओके, सो दैट विल बी योर गेन इन द कॉल। और पुट में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल हम लोग 82.87.50 का जो है वो सेल करेंगे, और एक आउट ऑफ द डीप आउट ऑफ द मनी का जो है 8250 या 82 जो भी है उसका अगर हम लोग पुट बाय करते हैं 2 पैसा में, सो उसमें भी हमको इनफ्लो रहेगा 8 पैसे का। सो ये आपको बेसिकली हाई वोलेटिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए दोनों जो हम लोग डीप आउट ऑफ द मनी कॉल और डीप आउट ऑफ द मनी पुट लेते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन के लिए ये आपको हेल्पफुल करेगा। ये जो सिनेरियो है जो भी आयरन कॉर्नर का है, इसमें आपका मैक्सिमम गेन जो प्रीमियम आपको मिलेगा सेल करके, या टोटल प्रीमियम दैट यू गेट, दैट विल बी योर बेनिफिट। ओके, अगर मार्केट और जो ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, ओके, सो 80 समझ लीजिए 8330 के ऊपर गया, तो आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। बट हाँ, आपको लॉस कब होगा, जब 8350 के ऊपर या 8250 के नीचे मार्केट चलेगा, तभी आपको लॉस होगा। दीज आर द टू स्ट्रेटेजीज। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर वोलेटिलिटी मार्केट में आगे है, सो ये दो आप कर सकते हैं। अभी कि अगर आपको लगता है कि मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी है, ज्यादा आपको चांसेस है कि डॉलर रुपी 60-70 पैसा या 80 पैसा ऐसा मूव हो जाएगा, सो उसके लिए आपको क्या करना है। अभी देखिए, ये वीक तो लास्ट वीक तो ज्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन उसके प्रीवियस वीक में आपको देखेंगे तो ज्यादा वोलेटिलिटी था, डॉलर रुपी 83 के आसपास चला। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैडल जो है यानी एट द मनी के कॉल और ऑप्शन में, उसमें आप लॉन्ग कॉल कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करता है, लगता है मार्केट में आने वाले दिनों में अगर होना चाहिए कुछ ऐसा इवेंट आ गया, सो आपको समझ ली 83 के कॉल और पुट जो कि है प्रीमियम देके आपको खरीदना पड़ेगा। यू हैव टू बाय दैट एंड द टोटल प्रीमियम दैट यू हैव टू पे, दैट विल बी योर मैक्सिमम रिस्क इन दैट केस। एंड फॉर एग्जाम्पल अभी 8250 का है, प्रीमियम है 8 पैसा का, एंड 8250 का पुट भी है, समझ लीजिए इट इज 20 पैसा और समथिंग एनी अराउंड, सो टोटल लॉस विल बी योर 30 पैसा, दैट प्रीमियम दैट यू हैव पेड, दैट विल बी योर टोटल। बट इन दैट केस अगर ये मूवमेंट ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 8260 पे ऊपर चला जाता है, या फिर आपको ब्रेक इवन इन दैट केस, अभी कॉल का 8250 है एंड 8 पैसा आपका प्रीमियम है, तो 82.58 के ऊपर आपका that will be your like if it will move above that, you can get the money in the call, but in similarly the put value will be reduced। इसमें आपका टोटल प्रीमियम, it is a total volatility play, and if prices goes high or below the range, तो आपको इसमें चांसेस है कि प्रॉफिट। बट हाँ, अगर ये रेंज में रह गया तो द प्रीमियम दैट यू हैव दैट यू पेड, दैट विल बी योर लॉसेस। अभी सेम थिंग अगर स्ट्रैंगल हम लोग देखेंगे, स्ट्रैंगल में क्या है, अगर आप रेंज अगर देखिए, अभी समझ लीजिए राइट नाउ डॉलर रुपीज समथिंग फॉर एग्जांपल 8250, सो हम लोग इफ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट high volatility will come, and if the pair will go beyond 8275, or maybe it can go like whatever event scenario, in case of events like अभी अगर 8225 के भी नीचे अगर चला जाए, सो उसको प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको कम प्रीमियम देना है, तो आपको वो रेंज जो भी है हमारा, जो आउट ऑफ द मनी के जो कॉल और पुट है, वो दोनों बाय करना है। अगर देखिए अभी 8275 का प्रीमियम आपने पे किया है 4 पैसे का, ओके, एंड पुट ऑप्शन जो है उसका भी 82 का आपने 2 पैसे में बाय किया है, सो इन दैट केस आपका जो लॉसेस रहेगा 6 पैसे का, एंड रिवॉर्ड विल बी अनलिमिटेड। और अपसाइड में अगर ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे तो 82.79 रहेगा, और लोअर के लिए आपका 81.9 रहेगा। सो इसके रेंज के बाहर आप जो भी है गेन और ये आपको मिल सकता है। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज, एंड अगर वोलेट थीटा के लिए अगर ये जो नया इंट्रोडक्शन हुए हैं इसके लिए अगर प्ले करना है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी फॉर एग्जांपल किसको अभी रिसेंट जो भी है करंट सिनेरियो में आपको ऐसा नहीं लगता है कि 8330 के ऊपर डॉलर जाएगा इन शॉर्ट टर्म, लेकिन सो आपको अभी 8250 का जो
कॉल आप राइट करते थे, उसके बदले आपको 82 जो और एक है 8238.5, वो कॉल में भी आपको सेल करने का या थीटा प्ले करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, एंड उसमें आपको ज्यादा प्रीमियम रहेगा। यस, रिस्क विल बी आल्सो देयर। सो मेरे हिसाब से आप अगर थीटा प्ले करना है, सो ये एक ऑप्शन है, आप इसमें कर सकते हैं। और ये जो नया इंट्रोड्यूस्ड ऑप्शन स्ट्राइक्स है, दैट विल हेल्प यू आउट टू गेन मोर। एंड आल्सो आई थिंक मोर लेग्स ऑप्शन स्ट्रेटजीज के जो है, जैसे कि आयरन कॉर्नर हो गया, आयरन फ्लाई हो गया, इसको करने के लिए आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। दिस इज फ्रॉम माय साइड सर, एंड नाउ इज टू रमेश। Yeah, thanks, Anup. And this is our research disclaimer. This is the research team which is there. So Raj, Saif, and Anup are the part of the research, and this is the disclaimer. I need to run it as a process after giving any of those research recommendations. So that's how this disclaimer in front of you. Thanks, Anup. Jitin, I can't see the questions in Zoom. In case there are any, can you just take those questions, whether it's or for we have the one question for Anup, that is on strategy. So Anup, it is related to your last few slide. The question is, can we elaborate on insurance strikes for straddle? That is risk for a single short straddle or strangle versus iron condor or butterfly, where position is his. In case if you can see the chat, you can read and understand, and then you can answer. One second, I'll let me see. That is the last question, last chat in the Zoom chat. Okay, just a second. Y'all, please do type your questions. They can be to me or on the product side to Mr. Vittal or to Anup on research. So we'll try to answer as many as possible. I know it's 10:49. We have another 5 minutes to go, so we can make effective use of this time. Yeah, I think till the time Anup looks at it, this video will also be available on YouTube. Okay, and right, I've just put some links on YouTube. I also like to share it here, which talks about the different option contracts or the webinars that we have done, which devolve or which talk about options in depth. So, in between, there was one question on margin requirement. I could see one question in Zoom chat and one in YouTube chat also on options. So, sir, we can share the our margin calculator if it requires. Sure. Please go ahead, Jiten. Yeah. Just allow me a few seconds. I am logging to account. Jitin, can I answer that question? If it's Yeah, please go ahead with that strategy question. See, when we talk about straddles and risk for short straddle and strangle, the total premium that you paid, that will be the total risk. That is like, for example, straddle, you have paid uh, long straddle or strangle, that is 30 paisa or 20 paisa. So in long straddle, that is the total risk. Okay. In short straddle, the risk is, I think it is we have to calculate on that. And but yes, beyond a certain times, that list will be unlimited. Yes, because it is a theta plate. So if the range moves beyond the maximum losses, we have to calculate, and it will be higher in short straddles and short straddles. When it comes to iron condor and butterfly, the losses are also like it will be unlimited in if the volatility will be high. Okay. Yeah, Jiten, over to you. In case you can just show the screen. And in the meantime, I'll just check if there are any more questions in YouTube live.
Yeah, I've just shared link of Telegram also, or Yeah, just let me know once my screen is visible. yeah, visible. Yeah. Then please proceed. So on ICICI Direct, under currency, commodity, all the segment, we have one main tool, main menu bar, that is Smart Tool. Under Smart Tool, एक मार्जिन कैलकुलेटर करके हमने फंक्शनलिटी दी है. So where you can go and calculate the margin before entering to trade for particular contract. Just like I am here typing USD INR. After typing USD INR, I will get all the relevant information like strike, expiry date and other information if market is open. Suppose I wanted to buy USD INR at 83 rupees. So I wanted to know how much is the margin required for one lot. So then I just need to click on add button. I can see here that 2126 is the margin required. Similarly, for options, if somebody wanted to check the margin requirement for option, because there was one question in YouTube on option. So if you are buying option, you need to pay the premium. But if you want to sell or short the option, you wanted to do the option writing, then again, similar to future buy or future sell, you need to pay the margin. So let's see, we will check one example of short option contract. For example, I wanted to sell 83 call option at a price of, for example, 10 paisa. So what should be my margin? So here I can see that 2427 is the margin requirement for future. Option writing position. So just wanted to show that there is a tool under Smart Tools, margin calculator. From that page, you can calculate the margin before entering into trade. Yeah. Over to you, sir. Okay, thanks. Let me just share my screen. Yeah. So I hope there is some value that we added today, some new understanding. So just before closing, I just wanted to say why ICICI Securities. We are one of the best bank brokers, robust risk management, right? And at ISEC, with 3-in-1 account, the fund transfer is seamless and our pricing is very, very competitive. 20 rupees per executed order. You hit one lot or 100 lots, 1 million, 10 million, it's just 20 rupees per executed order. So apply, and moreover, you can trade from any of those platforms, which can be web, mobile, like markets app, super apps, so on and so forth. This is a new feature which we have gone live. Shares as margin. In case you hold shares in your demat equity shares, you can pledge those shares and use the margin to trade currencies and commodities both. So this is a new feature which is available. And the interest, in case you do a intraday trade, it's zero. There is no interest cost for using your pledge shares. If at all you carry forward overnight, then there's an interest component which comes into picture, which is 0.025% per day. Every 1 lakh of margin utilized 25 rupees. So that's how it works. Yeah. This is a QR code. We keep coming out with a lot of research recommendations and information on currencies and commodities through Telegram channel. So this link, in case you can take a picture through your QR code, I highly recommend to get added on this so that you keep getting understanding information about currencies and commodities, which will help you to become a better trader. So I'll be there on the screen for 10-15 seconds in case you can take the pic, or you can go on Telegram and search ICICI Direct currency and commodity. Right. So this is what we had from our side today. We tried to add some value to all of you. I hope there would have been some new learning for you. Maybe many of you said one, and maybe end of this seminar, at least I think you would have moved to 2, understand what are the different currencies pairs, why trade currencies, what are the strike intervals, futures, options available, margin requirement, so on and so forth. I request you to use the chat box and type why, in case at least from 1, next time you come, either it's 2, 3, or 4, maybe not 10. I know it's tough to become 10. Even I don't rate myself 10 after being in markets for 20 years. Yeah, Venkat, as I suggest, request you to go to ICICI Direct, currency and commodity on Telegram channel, you will get it. Yeah, thanks, Kurupolu.
I know. Thank you for all the participants who have been there on this Zoom call today. Thanks all the participants who have been there on YouTube too, taking off your time on a Saturday morning. You could have done many things on this Saturday morning, spend time with your family, friends, right? But you all choose to become a better person by knowing, understanding a new product, right? So a big thank you to all of you. Thank you, Vithal, for taking off time. It was pleasure having you with us, right? And all that 28 years of experience. And thanks for this product launch. NSE has always been coming out with new things which has helped traders. Thank you for doing that. Thanks, Anup. Thanks, Jitendra. Thanks, Rishi, for organizing this. Thank you so very much. Thank you. Have a great day. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.